Hello everyone, welcome back. Today I am here with one important topic of plant embryology, that is microsporangium and male gametophyte. I will try to cover this topic in two parts. Today I will focus on microsporangium, basically what is stamen and the structure of anther, and what are the various components which form the anther that I will discuss in this today's topic. Stamen or microsporophyll. It represents the male reproductive structure in a flower, and the number of stamen in a flower is usually the same as that of petals, but there are some variation in some flowers. So each stamen usually consists of a long cylinder stalk, जिसे कहते हैं filament, that is known as filament, and an upper fertile portion which is known as anther. And these two structures combine to form stamen. So this animated photograph show clearly that this stamen consists of a long filament, it is stalk-like structure, and the upper portion, which is a fertile portion, that is known as anther, that gives rise to the stamen. The typical anther is bilobed and tetrasporangiate. It means it consists of two lobes that we can see from the front side and consists of four sac-like structure which are commonly known as pollen sacs. So this structure is known as tetrasporangiate. There are some exceptions. Here I am discussing some facts. So a bilobed anther is bisporangiate, that is monothecous flowers, and monothecous term is used for the filaments which are fused to form a single bundle. So सभी के सभी जो stamens हैं वो fuse होके एक ही bundle बनाते हैं. That we can find in the members of Malvaceae, like we have hibiscus. तो ये कुछ families हैं जिनमें जो anther है that is bilobed and bisporangiate. It means it consists of only two pollen sac. And it is found in some members of family Malvaceae, Euphorbiaceae, Adoxaceae, and some genus like we have Salvia, Moringa, and Wolffia. Then we have monosporangiate anther, that is it consists of only single pollen sac, as it is found in Arceuthobium. This is found in Arceuthobium. Then 8 sporangiate pollen sac, it is found in family Bixiaceae. Anther consists of 8 pollen sacs. Then multisporangiate in case of Lorantheaceae and Rhizophoridaceae. If we talk about the number of stamens, so there is only one stamen in many members of family Orchidaceae. So Orchidaceae के कई ऐसे members हैं जिनमें single stamen present होता है, while there may be hundreds of stamens which are present in the same flower, like we have members of family Myrtaceae. Then there is one plant, that is baobab tree. It is a tree which is native of Africa and Arabian Peninsula. This is the photograph which shows this baobab tree, and it is represented by a genus Adansonia, and consists of many species, and it is known for its extraordinary longevity. So इसकी जो lifespan है बहुत ज़्यादा होता है, and it is mostly found in dry area that we can see in this photograph. So इसके जो flowers हैं, they can have 2000 pollen producing stamens. तो इसके जो flowers. Next comes development of anther and microsporangia, how this anther develop and how microsporangia are formed. So young anther develops from third whorl of floral meristem. जो floral meristem है उसका जो third whorl है, third layer है, which later becomes four-lobed in appearance. So उससे anther की development होती है. A group of hypodermal cell becomes prominent in each lobe. हर एक lobe में एक group of hypodermal cell prominent हो जाता है, and are arranged in vertical rows called archisporial cells. और ये vertical row में arrange होते हैं जिन्हें कहते हैं archisporial cells. These cells are known as archisporial cells. These cells divide by periclinial division, means they will increase the number of layers to form outer primary parietal cells and inner primary sporogenous cells toward the center. तो ये जब periclinial division से divide करते हैं, बाहर की तरफ को ये बनाते हैं outer primary parietal cells, और अंदर की तरफ को ये बनाते हैं primary sporogenous cells towards the center. Then these primary parietal cells divide again
जो बाहर के सेल्स हैं प्राइमरी पैराइटल सेल्स वो फिर से डिवाइड करेंगे टू फॉर्म आउटर सेकेंडरी पैराइटल सेल्स एंड इनर सेकेंडरी पैराइटल सेल। तो दो लेयर्स में फिर से डिवाइड हो जाएंगे, एक बाहर वाली आउटर सेकेंडरी पैराइटल सेल दैट इज SPL1 एंड इनर सेकेंडरी पैराइटल सेल SPL2। Then these primary and secondary cells divide and give rise to 4 types of anther walls। तो ये डिवाइड करके बनाते हैं 4 तरह के anther walls। Then the sporogenous cells start behaving as microspore mother cell। जो अंदर के sporogenous cells हैं वो start करते हैं behave करना microspore mother cells and these all cells are diploid in nature। ये as the plant is sporophytic तो ये है diploid। Either directly, ये या तो डायरेक्टली बिहेव करता है माइक्रोस्पोर मदर सेल और दे कैन अंडरगो सम माइटोटिक डिविजन्स और ये ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट कम्स स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। If we talk about structure of anther, so it consists of anther walls and sporogenous tissue। तो दो पार्ट्स में ब्रॉडली इसको डिवाइड कर सकते हैं, anther walls and sporogenous tissue। Then if we talk about anther wall, तो anther wall बनी होती है एपिडर्मिस से, एंडोथीशियम से, मिडल वॉल लेयर से एंड टैपेटम। सो ये 4 सब लेयर्स प्रेजेंट होती हैं anther walls में। If we talk about undifferentiated anther, this flowchart shows the structure of anther. It consists of outer epidermis. Then the second portion is archisporium. This archisporium gives rise to the primary parietal cell that we have discussed and primary sporogenous cell। जो primary parietal cells हैं वो periclinal division से divide करते हैं, they form secondary parietal cell and secondary, that is outer secondary parietal cells and inner secondary parietal cells। और जो secondary parietal cells हैं outer वाले वो बनाता है endothelium, while जो अपर मिडल लेयर्स हैं वो भी इसी से बनती है, मिडल लेयर्स विच आर फॉर्म्ड बाय दिस आउटर सेकेंडरी पैराइटल सेल। देन दिस इनर सेकेंडरी पैराइटल सेल दैट गिव राइज टू लोअर मिडल लेयर, देन मिडल लेयर इट इज फॉर्म्ड बाय दिस इनर सेकेंडरी पैराइटल सेल एंड tapetum is also formed by this inner secondary parietal cell। If we talk about this primary sporogenous tissue, या तो ये डायरेक्टली बिहेव करता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, either it can undergo certain mitotic division, then these cells will behave as microspore mother cells, these are diploid, then they will undergo meiotic division, these microspore mother cells will undergo meiotic division, then they will give rise to the haploid pollen grains। Next we will discuss these anther wall layers one by one। First is epidermis, as the name indicates it is the outermost layer, protective layer which covers the anther। So epidermis is a single layered protective sheath of the anther। It divides anticlinally and tries to keep space with the enlarging internal tissue of the anther। Epidermis develops fibrous bands in case of arceuthobium। जो arceuthobium है उसमें epidermal cells में fibrous bands develop होते हैं। Cells become binucleate in there are some plants, इसमें my epidermis के जो cells हैं वो binucleate होते हैं, it means they contain 2 nuclei in one orchid that is Euxine longilabris। It provides the structural integrity to the anther। जो epidermis है ये structural integrity provide करता है anther के लिए and protect the underlying layer, और अंदर की layers को protect करता है। This is the photograph of arceuthobium and this is orchid that is Euxine longilabris। Next layer is endothelium which is present beneath the epidermis। So जो epidermis के नीचे वाली layer है that is called endothelium। This layer is known as endothelium which is present beneath the epidermis। So this is the second layer of anther wall just beneath the epidermis। It usually consists of radially elongated cells and they arise from the primary parietal cells। जो primary parietal cells हैं उससे ये endothelium बनता है। Usually it is single layered but rarely it may be bilayered as in case of Coccinia innata or multi-layered in case of Capsicum annum, Dhatura, Nicotiana tabacum etc। So in plants में endothelium multi-layered होती है। It contains a unique fibrous thickening band that develops on the radial walls of endothelial cells। So इन cells पे इनकी radial wall पे special fibrous thickenings होती हैं which is the characteristic feature of this endothelium। and जो endothelium है ये absent होती है in clistogamous flowers, ऐसे flowers जो open नहीं होते हैं
and in those stamens which dehiscence by पोर फॉर्मेशन, जिसमें पोर प्रेजेंट होते हैं, सो पोरेट डेहिसेंस वाले जो स्टेमन्स हैं उनमें भी एंडोथीशियम एब्सेंट होता है. मोस्टली जो एंडोथीशियम है इट फॉर्म्स द यू शेप्ड बैंड्स बट कैन बी रेटिकुलेट. जो ये बैंड पैटर्न्स हैं ये रेटिकुलेट भी हो सकते हैं नेटवर्क लाइक बैंड्स एज इन केस ऑफ मैग्नोलिया स्टिलेट. दे मे बी ट्रांसवर्स एज इन केस ऑफ मोमोर्डिका चारेंटिया दैट इज बिटर गोट, और ओवरलैपिंग स्पाइरल बैंड्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं एज इन केस ऑफ मिलोथेरा मेड्रा स्पेटेना. सो ऐसे ही वेरिएशन शो करते हैं एंडोथीशियम के बैंड पैटर्न्स, और इसका जो मेन फंक्शन है इट इज़ मेनली कंसर्न विद डेहिसेंस ऑफ एंथर. जो एंथर्स है उसकी डेहिसेंस के साथ इसका कनेक्शन है. ये जो सेल्स हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फाइब्रस बैंड्स इट शोज हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट्स, हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन शो करते हैं एंडोथीशियम के सेल दैट हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ anthers. So this is the main function of endothelium. Next comes middle layers. So endothelium के अंदर जो layers हैं these are known as middle layers. So these are present just below the endothelium and the number varies from 1 to 3 layers. एक से लेके 3 layers present हो सकती हैं. 5 in case of Lilium and Nigella damascena. So इनमें 5 present होती हैं. जो मिडल लेयर्स के सेल्स हैं दे आर रिच इन रिजर्व फूड सच एज स्टार्च एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल. सो मेन फंक्शन है इसका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को. लेयर राइज फ्रॉम द प्राइमरी पैराइटल सेल. जो प्राइमरी पैराइटल सेल है उसी से बनती हैं मिडल लेयर्स एंड गेट्स क्रश्ड ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. जैसे पोलन ग्रेन्स बनते हैं उस समय ये मिडल लेयर्स क्रश हो जाती हैं. कंप्लीटली दीज लेयर्स आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड बिफोर डेहिसेंस. Sometimes this layer develops thickening like endothelium as in case of agave, argemone and gloriosa. So in plants में जो ये middle layers हैं ये भी endothelium की तरह thickenings develop करती हैं. So these inner layers which are present beneath the endothelium are known as middle layers. और इनका main function होता है to provide nourishment to the developing microspore mother cells. Next comes tapetum. It represents the innermost layer in middle layers. ये large size cells होते हैं जिसके अंदर बनते हैं microspores और ये provide करते हैं nourishment. Main function is to provide nourishment. So this is the innermost layer of anther surrounds the sporogenous tissue. जो sporogenous tissue को surround करती है ऐसी layer that is called tapetum. Usually made up of one layer of cells, but rarely can be bilayered as in case of एरम इटैलिकम. टेकोमा इनमें बाइलेड होती है और मे बी मल्टी लेयर्ड इन केस ऑफ ऑक्सीस्टेल्मा. सो इन प्लांट्स में ये मल्टी लेयर्ड होती है. इस प्लांट में ऑक्सीस्टेल्मा में इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग लार्ज साइज सेल्स. इसके सेल अगर हम देखें ये लार्ज साइज सेल्स होते हैं विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें. It supplies food to the developing microspore mother cells and microspores. तो ये nourishment provide करता है developing microspore mother cells को और जो microspores बनते हैं after meiotic division of microspore mother cells. So it shows dual region in most of the angiosperms. Dual region, that is a part of tapetum present towards the epidermis arise from derivative of PPC, that is primary parietal cells, and a part of tapetum towards the connective फ्रॉम द सेल्स ऑफ कनेक्टिव. तो दो टिश्यूज़ इन्वॉल्व हैं टेपेटम की फॉर्मेशन के लिए, दैट इज़ प्राइमरी पैराइटल सेल्स और जो कनेक्टिव के सेल्स हैं दीज बोथ आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ टेपेटम. दैट्स वाई इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म इट्स ओरिजिन इज ड्यूल. टेपेटम आल्सो हेल्प्स इन पोलन वॉल डेवलपमेंट. जो पोलन वॉल डेवलपमेंट है, पोलन ग्रेन की वॉल डेवलपमेंट, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. डिपेंडिंग अपॉन द फेट एंड फंक्शन ऑफ टेपेटल सेल्स इट कैन बी अमीबॉइड और secretory. सो जो tapetum है डिपेंडिंग अपॉन इट्स फेट और फंक्शन ये दो तरह का होता है, दैट इज अमीबॉइड और secretory. फर्स्टली कम्स द अमीबॉइड tapetum. एज द नेम इंडिकेट जो ये सेल्स हैं दे विल फॉर्म अ पेरीप्लाज्मोडियम लाइक स्ट्रक्चर जो कि अमीबा की तरह स्ट्रक्चर बनता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज इन्वेसिव और पेरीप्लाज्मोडियल tapetum. इसे इन्वेसिव और पेरीप्लाज्मोडियम tapetum कहते हैं. इट अकर्स मोस्टली इन मोनोकॉट्स.
मोनोकॉट्स में जैसे एलिस्मा है, एरम है, सेजिटेरिया, टेडेस्केंशिया, टाइफा है, एंड इन सम डाइकॉट्स लाइक वी हैव हेलियंथस एंड महोनिया। तो इनमें ये अमीबॉइड टैपेटम प्रेजेंट होता है। The hair inner walls of tapetum breaks due to action of hydrolytic enzyme। जो अंदर की walls हैं टैपेटम की वो ब्रेक हो जाती हैं due to action of some hydrolytic enzymes and breakdown occurs in different stages in different species। तो ये यूनिफॉर्म नहीं है सभी प्लांट्स में। जो ब्रेकडाउन है it occurs in different stages and different species। The tapetal protoplast enlarges and moves into anther sac। जो ये प्रोटोप्लास्ट है टैपेटम का वो एनलार्ज हो जाता है, साइज में इंक्रीज होता है, एंड मूव्स इनटू द एंथर सैक एंड फ्यूजेस टू फॉर्म द पेरीप्लाज्मोडियम। और एक फ्यूज करके एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे बोलते हैं पेरीप्लाज्मोडियम। दिस सराउंड्स द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एंड माइक्रोस्पोर। और ये टिश्यू सराउंड करता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को और माइक्रोस्पोर्स को, एंड मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड नरिशमेंट एंड हेल्प्स इन एक्साइन फॉर्मेशन, दैट इज द आउटर लेयर ऑफ pollen grain, by providing sporopollenin precursor that we'll discuss in upcoming slide. It also helps in secretion of pollens, separation of pollens from tetrad by secreting callase। so एक cementing material है जो pollen grains को separate करने में help करता है। वो pollen grain की walls के बीच में present होता है, that is callase। so that is also secreted by this tapetum cell। then periplasmodium degenerates and coats outer surface of axine in the form of a yellow sticky substance that is known as pollen kit and trephine। so pollen kit और trephine बनता है वो भी due to disintegration of this periplasmodium की वजह से बनता है, and it plays very important role in pollen transfer। so ये एक sticky material होता है जो insect की body में stick करता है, जिससे जो insects हैं वो pollen को transfer करते हैं एक plant से दूसरे plant के ऊपर। Next type of tapetum is secretory tapetum। so it is not invasive। इसमें जो cells हैं वो break down नहीं होंगे, they will be intact रहेंगे। so this is also known as glandular, parietal or cellular tapetum, occurs in mostly dicots। so cell remains intact। इसमें जो cells हैं वो intact रहते हैं, means वो break down नहीं होते until maturation of microspores, जब तक कि microspore mature ना हो जाए। cells are characterized by occurrence of large number of spherical and lipoidal pro-orbicular bodies। so special कुछ spherical और lipoidal means fat containing substances present होते हैं जिन्हें कहते हैं pro-orbicular bodies और pro-ubish bodies। in addition to this they also contain mitochondria, plastids and dictyosomes। so ये भी present होते हैं इन cells में। जो प्रोयूबिश बॉडीज होती हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द सेल सरफेस बाय टैपेटम वेयर दे गेट्स कोटेड विद स्पोरोपोलिन। जो प्रोयूबिश बॉडीज हैं वो कोट हो जाती हैं विद स्पोरोपोलिन एंड बिकम ग्लोबुलर ऑर्बिकुलर बॉडीज जिन्हें कहते हैं यूबिश बॉडीज। दे आर नाउ एक्टिव बॉडीज, यूबिश बॉडीज। These bodies helps in pollen maturation and formation of pollen outer wall layer। so एक्साइन बनाने में भी हेल्प करते हैं और पोलन मैचुरेशन में भी ये यूबिश बॉडीज हेल्प करती हैं। so इसमें जो सेल्स हैं टैपेटम के वो इंटैक्ट रहते हैं, वो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, एंड दे सक्रीट दीज प्रो यूबिश बॉडीज, और ये कंबाइन करती है स्पोरोपोलिन के साथ टू फॉर्म यूबिश बॉडीज जो पोलन मैचुरेशन और एक्साइन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। so this is the function of secretory tapetum। next comes function of tapetum। so mainly जो function है tapetum का that is to provide nourishment to the developing microspore mother cells and microspores। so this tapetum is nutritive layer of the anther, as the name indicates to provide nutrition to the developing microspore mother cells and microspores and contributes to the pollen wall formation। और ये pollen wall बनाने में help करता है। it helps in separation of individual pollen by secreting callase enzyme, and it also helps in deposition of pollen kit and trephine on the axine, that is a yellow color sticky substance। this deposits specific protein on the surface of pollens that helps in pollen pistil interaction। so in addition to this ये स्पेशल प्रोटीन को डिपॉजिट करता है पोलन के सरफेस के ऊपर, जिससे पोलन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई करते हैं स्टिग्मेटिक सरफेसेस। इट प्रोवाइड द प्रिकर्सर ऑफ स्पोरोपोलिन that makes the pollen grain highly resistant
structure. So जो sporopollen है that provides resistance to the pollen grain, that इसका जो precursor है that is also provided by this tapetum. So these are various functions of tapetum. Next comes sporogenous tissue. This sporogenous tissue arises from the archisporial cells through periclinial division that we have already discussed. The sporogenous cells start behaving as microspore mother cells either directly, और ये divide कर सकते हैं कुछ समय तक mitotic division से before they act as microspore mother cells. These microspore mother cells then undergo meiotic division to form haploid pollen tetrads. और ये जो सारा प्रोसेस है it involves following steps that we will discuss in detail. Next comes syncytium formation. So cells of anther walls, tapetum and sporogenous tissue in young and developing anthers have plasmodesmata connection among them to help the flow of nutrients between these layers. So जो plant cells होते हैं उनके बीच में एक bridge present होता है that is known as plasmodesmata, और ये हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल्स, और जो भी मटेरियल है वो एक्सचेंज होता है इस ब्रिज के थ्रू बिटवीन टू सेल्स. सो दिस कनेक्शन इज प्रेजेंट एट यंग स्टेज इन एंथर वॉल, tapetum, sporogenous tissue, which helps in flow of nutrients between these layers. These connections are blocked. ये जो कनेक्शन है ये ब्लॉक हो जाते हैं आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ meiosis, बट द सेल्स ऑफ सम लेयर स्टिल रिमेन इन कनेक्शन विद ईच अदर. तो मोस्टली जो सेल्स हैं इनके बीच का जो ये कनेक्शन है ये ब्लॉक हो जाता है, बट इन सम लेयर्स दिस कनेक्शन रिमेन्स. ये कनेक्शन रहता है कुछ लेयर्स में. सो ईच स्पोरोजेनस सेल स्टार्ट डेवलपिंग अ न्यू कैलोज लेयर विच इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा 1,3, दैट इज पॉलीमर ऑफ बीटा 1,3 ग्लूकेन, अ पॉलीसेकेराइड है, वॉल ऑन इनर साइड ऑफ सेलुलोजिक वॉल. जो सेलुलोजिक वॉल है दैट इज द आउटर लेयर, उसके अंदर एक और लेयर बननी शुरू होती है दैट इज ऑफ कैलोज स्पोरोजेनस सेल में. सो स्पोरोजेनस सेल की जो सेलुलोजिक लेयर है उसके अंदर कैलोज की लेयर बननी शुरू हो जाती है. लेटर ऑन सेलुलोजिक वॉल डीजनरेट्स, जो सेलुलोजिक वॉल है दैट इज आउटर लेयर वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, एंड द प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन बिटवीन द सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू बिकम्स वाइडर. जो प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शंस हैं इन सेल्स में स्पोरोजेनस सेल्स के बीच में वो ज़्यादा वाइड हो जाते हैं, सो दैट फ्री पैसेज ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनेल्स टेक्स प्लेस बिटवीन द ऑल सेल्स. सो जिसकी वजह से जो मटेरियल है दो सेल्स के बीच में एक्सचेंज होता है ईजिली, दैट इंक्लूड ऑर्गेनेल्स और साइटोप्लाज्म, एंड ऑल द MMCs बिहेव एज अ सिंगल यूनिट. इस स्टेज में जो सारे के सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं वो बिहेव करते हैं एज अ सिंगल फंक्शनल यूनिट. सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज syncytium. Syn means fused, syncytium means cells. So fused cells. So they behave as a single unit and this structure is known as syncytium. It helps in regulating the synchrony of microspore development. So ये help करता है simultaneous formation of all the microspores. तो इसके लिए important step है. Next comes isolation of microspore mother cells and microspores. So the callose wall on microspore mother cells extend to the region of plasmodesmata connection with the progressing meiosis reaching metaphase 1 cases with successive cytokinesis or metaphase 2 cases with simultaneous cytokinesis that we will discuss in upcoming slides. In this way, microspore mother cells are completely isolated from the adjoining microspore mother cells by a callose wall. So जो microspore mother cells हैं ये एक दूसरे से separate होते हैं by a wall which is formed by callose. Then meiotic division results in formation of 4 haploid microspores. So meiosis के result से 4 एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, एंड द कैलोज वॉल इज आल्सो ले डाउन बिटवीन द वॉल्स ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स. तो माइक्रोस्पोर्स के बीच में भी ये कैलोज की वॉल बनती है जो कि सेपरेशन में हेल्प करती है माइक्रोस्पोर के इन टेट्राड, दस आइसोलेटिंग द इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर, और ये हेल्प करता है आइसोलेशन ऑफ इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर. This is all about for our today's discussion. In next lecture, I will discuss about microsporogenesis, how pollen grains are formed, and how pollen walls are formed. So, if you have any questions, any queries, and any suggestions regarding this presentation, you can give it in comment section. Hope you will get some idea from this presentation. Thanks for watching. Have a great day.